जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से Oh my God, that was live, and I thought that was live, but it wasn't for maybe 5 minutes. हे परीक्षित, जो समर्थमान पुरुष So now verse 10, अहंकारहीन होते हैं, 10th canto, 33 chapter, 34 verse, 34, 10.33.34. Gurudev says, everybody should learn this verse. It's such a beautiful verse. Gurudev was reciting this verse, very beautiful. Translation of the verse. Material activities never entangle the devotees कैसे जोड़ा जा सकता है? of the Supreme Lord, who are fully satisfied by serving the dust of His lotus feet. Nor do material activities entangle those intelligent sages who have freed themselves from the bondage of all fruitive reactions by the power of yoga. So how could there be any question of bondage for the Lord Himself, who assumes His transcendental forms according to His own sweet will? जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगीगण अपने सारे कर्मबंधन काट डालते हैं और विचरणशील ज्ञानीजन, ये विचारशील ज्ञानीजन जिनके तत्व का विचार करके तत्व स्वरूप हो जाते हैं तथा समस्त Verse 33 also Gurudev read, how then could the Lord of all created beings, animals, men and demigods have any connection with the piety and impiety that affect His subject creatures? तब भला उनमें कर्मबंधन की कल्पना ही कैसे हो सकते हैं? How could there be any question of bondage for the Lord Himself? शास्त्र में कहते हैं, Shastra explains, जैसे कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार फल भोगते हैं। you suffer the karma according to what you do. गोपियों के साथ So Krishna, जो प्रेम विहार आदि किया, he performed many pastimes with the gopis. वो तो अवैध है। This was illicit relation. ऐसे अवैध कर्म करने पर उसके कर्मफल भोग करना पड़ता है। So when you do something which is illegal, you have to suffer the results. Verse 10, canto 33, chapter 33, verse 34. इसलिए कहते हैं, So Bhagavan doesn't have any karma foul, fruit of karma. Bhagavan is Atmaram Aptakam. वो चिन्मय By his own desire, जो है प्रकट करते हैं, he assumes this transcendental form. तब उनकी बंधन कहाँ से आएगा? So how do he be ever bound? बंधन के कारण क्या है? So what is the cause of our bondage in this world? Is the karma. You do good karma and bad karma, and because of this, the jivas, they are bound in this material world. And to suffer these reactions, we have to come back again and again to this world. Why do the jivas come to this material world? To enjoy or suffer the results of our actions. So if we've done good things, we have to like get this good reaction back, and also you have to, if you do bad things, you have to suffer that. So you have to come back to enjoy or suffer. So you have to suffer or enjoy. You have to suffer or enjoy. This is the fruit of karma. If you do good karma, you get nice food, nice bed, everything, all facilities, all the happiness. If you do good karma, you attain that. If you do bad things, bad karma, you get so many kinds of sufferings, isn't it? इसलिए कर्म फल की भोगने के लिए इस संसार में जीव बार-बार So the jiva comes again and again to this world just to suffer the results of their karma. Even it's good karma or bad karma, you have to come back to enjoy or suffer the results. Bhoga Santi. Without suffering or enjoying your fruit of action, you cannot get the peace. So, what is the path of peace? You have to suffer or enjoy the result of your activities, your reactions. When you suffer your reactions, then you have peace, Shanti. But there's one very interesting thing. Actually, it never ends. It never ends. Because karma, it's made for you to come back again and again. Because you're always making more karma and coming. Because maybe your karma from previous life is finished, but you have from this life, then you have to suffer in the other life, this one that you made in this life. So you have two kinds of karma. Adhunik karma, like present karma, and praktunik karma is previous karma. So adhunik karma, adhuniki karma. What are you doing? That fruitive action you have to suffer after.
In this moment, what are you doing? This fruitive action you have to suffer after. Enjoying this one, that is you are coming from your previous fruitive action. But what you're suffering or enjoying now, this is coming from your previous action. Do you understand? Do you understand? Do you get my point? But Bhagavan, he doesn't have any karma. If he does not have any karma, there's no question of him suffering any reaction, any karma. The jivas, yes, they suffer the fruit of their action, karma fall. Something interesting also is actually, except for a human being, all the other animals, birds and all the other species, they are not creating new karma. They are only suffering the previous fruit of action. For example, someone killed a cow. Someone sorry, the cow killed someone. I'm sorry. So the cow with his horns, the cow has killed someone with its horn, her horns. So the cow has murdered someone. Murder, in other words, sorry, they killed someone. But the cow does not have to suffer that reaction of killing someone, a person. But another way, if a person kills a cow, then yes, the person will have to suffer the results for that action. Look how interesting. So the cow killed you, but the cow doesn't have to suffer any reaction. But if a human being killed the cow, then this human being must suffer the results. So what is the meaning? Except for a human being, all the other species, you have to, you don't need to suffer. You don't need to suffer aduniki karma, the karma from that life that you are making in that life. So animals and birds, they are doing which karma? They are suffering which karma? They are suffering the praktuniki karma fall, the fruits from previous lives that are coming out to them. So they are suffering the karma from the previous lives, but they are not creating. They are not creating no karma. But the human beings, we create like two. We are suffering the praktuniki karma fall. We are suffering the previous fruit of action, and in the same time, also we are doing karma, and this is being reserved for us in the future to get these fruits. So Bhagavan has no praktuniki or aduniki karma for him to suffer. So this sloka explains. तत्स्वेच्छया आप्त पुरुष कुतो एव बंधु ऐसे आप्त समस्त कर्म बंधन से मुक्त होकर स्वच्छंद विचार करने वाले विचरण करने वाले भगवान की कर्मफल कहाँ से आ जाएगा? How could there be any question of bondage for the Lord Himself, who assumes His transcendental forms according to His own sweet will? So this verse 34, chapter 33, 10th canto. Jog Vedota Khila Karma Bandha Sairang Charante Munayon Opinana Jamanam Tasechaya Apta Puruso Kutaeva Bandho Tasechaya Apta Purusa Kutaeva Bandho. जिनकी चरण कमल के मकरंद सुगंध प्राप्त करके receiving the fragrance of the lotus feet of Lord, everyone becomes full, satisfied by getting his dust of his lotus feet. चरण की स्मरण करके समस्त कर्म बंध. The yogis remember the lotus feet, and all their bondage of karmas are destroyed. शिक्षा विचरण करने वाले और मुनियों की भी तो क्या बात है, उनके भी पाप नहीं लगते, ना कोई कर्म रहता है. God has no karma. भगवान के कहाँ से कर्म बंधन आएगा? गोपीनां तत्
So material activity is not even entangle those intelligent sages who have freed themselves from the bondage of all fruitive reactions by the power of yoga. So how could be there any question of bondage for the Lord Himself? He who lives as the overseeing witness within the gopis and their husbands, and indeed within all embodied living beings, assumes forms in this world to enjoy transcendental pastimes. कर रहे हैं है बोले उनके पति में जो हृदय में जो परमात्मा विराजमान है. So Paramatma is also in the heart of the husband of the gopis, and this Paramatma is Swayam Bhagavan. विहार कृष्ण उनके साथ विहार कर रहे हैं. इसलिए गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां जो अंतश्चरति सो अधक्षज क्रीडनेह देहो भाको. वही अपना दिव्य चिन्मय विग्रह प्रकट करके He who lives as the overseeing witness within the gopis भगवान तो एक ही है. Assumes forms in this world to enjoy transcendental pastimes. Bhagavan is only one. परमात्मा और भगवान. Brahma, Paramatma and Bhagavan. ब्रह्म परमात्मा और भगवान एक ही विग्रह धरे तीन रूप. एक ही विग्रह है. So only one Vigraha. Three forms: Brahma, Paramatma and Bhagavan. तो ही भगवान परमात्मा का रूप में गोपियों की. So this Bhagavan in the form of Paramatma is also in the heart of the husband of the gopis. वही क्या कर रहे हैं? And also then गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि कर. He is also performing pastimes, amorous pastimes with the gopis. मानुसंदेवास्थितं भजति तादीश क्रीडा जास्तुत्वा तत्परो भवे. Verse 36. भगवान जीवों पर कृपा करने के When the Lord assumes a human-like body to show mercy to His devotees, He engages in such pastimes as will attract those who hear about them to become dedicated to Him. भगवान में तन्मय होकर के भगवान की सेवा प्राप्त कर लेते हैं. नासु अनखोलु कृष्णाय महिता स्वतः मायया मनमान स्पर्श स्थान सपार्श स्थान शान शान दरान ब्रजोकसम. करें क्या? देखो ब्रजवासी गोपी ने भगवान श्री The cowherd men, bewildered by Krishna's illusory potency, thought their wives had remained home at their sides. Thus they did not harbor any jealous feeling against him. देखो भगवान की जोगमाया के द्वारा. So by the Jogamaya of Bhagavan manifested such a pastime. Give me करता. क्या करें? ये ब्रजगोपियों भगवान श्री कृष्ण तनिक भी श्री कृष्ण में तनिक भी देह बुद्धि नहीं करते. गोपियों में कोई देह बुद्धि नहीं था. The gopis had no bodily conception, not at all. देहा स्मृति नहीं जार संसार को कहाँ दार. गोपियों के देहात्म बुद्धि नहीं है. The gopis, they don't have bodily conception. क्योंकि देहात्म बुद्धि ही क्या है? जीव की The bodily conception is the cause of our देह में आत्म बुद्धि bondage. इसका देहात्म बुद्धि. Dehatma buddhi, you think you're the body. इस देह में आत्म बुद्धि. If you think you're the body, your soul is the body. इसका आत्म बुद्धि से ही हमारे सारे अनर्थ. Because of this, all our anarthas, our bondage of karma is being created because of this. But the gopis, they don't have any kind of these things. They don't have. शरीर हूँ कि मैं स्त्री हूँ कि मैं पुरुष हूँ. ये चिंतन करने की समय. They don't even have time to think I'm a man or I'm a woman, or they don't even have time to think that. Because they're only absorbed in Krishna Seva, Krishna Katha. They're so absorbed. देहात्म बुद्धि नहीं रहती. इसी तरह देह स्मृति नहीं जा रही. संसार कुप कहाँ था?
संसार के बंधन तब तो होता है। So you'll be मैं ये bound, शरीर हूँ। you'll be bound in this material world. If you think you're the तब ये bodies, संसार के बंधन होता then you're attached to family and material world. है। But इससे ही if you're काम, आदि then from अनेक this प्रकार जो है bodily आकर के conception, then and this attachment, then so many anarthas come, called the lust, anger इसलिए come यहाँ and पर overtake लिखा you. है, But the gopis, they don't have any of ऐसे this. नहीं था कुछ। The gopis, they didn't have anything of this, like और no bodily सदा conception, anything. गोपियाँ कृष्ण में ही तन्मय रहती And they were always absorbed in Krishna. हैं। इसलिए कृष्ण भगवान ब्रजवासी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी देह बुद्धि नहीं की। जो उनके So Brajavasi and Krishna didn't have ऐसे समझ रहे a थे sense कि of हमारी bodily conception. पत्नियां हमारे पास ही है। दूसरी बात है क्या है, Other point also is that the gopas, they were eluded by Jogamaya. ऐसे जोगमाया उनके मन में Jogamaya arranged that the husbands of the gopis, they thought that their wives remained in the house, they were still in the house. जोगमाया ऐसे उनके मन में करता है जब Jogamaya came in the minds of the husbands and they thought, oh, my wife is in my house, she's working, she's milking the cow, she's cleaning the floor, रसोई बना रही हैं, she's cooking maybe. इस प्रकार So the husbands thought their wives were in the house. एक मूर्ति So actually Jogamaya established forms of these gopis in their house, मूर्ति स्थापन कर देते, like तो उसके पति लोग another form of the gopis inside their house. So the husband saw that form and thought, oh, my wife is there doing something. But actually Jogamaya arranged that murti, like another form of the gopis in the house. Do you understand? उनके सारे उनके Like a murti, you know, murti, like a form. Murti, everybody understand? Like a statue form. हमारे घर में काम कर रही है। So the husband saw that like murti and thought, oh, my wife is in the house working. But actually the real gopis, they had gone to meet Krishna, they had gone to the Rasa Leela. यहाँ पर ये आश्चर्य की बात। So this is very interesting, amazing. Huh? नित्य सिद्ध So something amazing. Look, the Nitya Siddha gopis, eternal associates of Krishna, like Radha, Lalita, Vishaka, etc. They are called Nitya Siddha. They are manifestation of Swarupa Shakti. इन लोग के लिए कोई मूर्ति तैयार करनी पड़ता है। They didn't have to. पतियों के मन में एक For them, they didn't have, Jogamaya didn't have to create any murti for them. But Jogamaya only arranged that their husbands felt some mood, like some thoughts. They thought, oh, my wife is in my house doing some work. Or maybe my wife, for some reason, she went to someone else's house to take something. She's coming back quickly. She'll come back soon. Because before, in the old times, you needed fire to start cooking, but then you would go to another person's house to pick up the fire. You know, fire. At that time there were no matches and these things, so you brought the fire from another person's house and you would switch on your like a stove. So suppose you don't have matches or you don't have any gas in your house, how to make fire? दूसरे के घर में जाओगे, you go to someone's house, उसमें जला करके ले आओ, यही तो हो सकता है। इसका अलावा और क्या करोगे? To take some fire from another person's house. उसमें इलेक्ट्रिक नहीं था। At the time there was no electricity. ठीक उसी प्रकार ये समस्त गोप सोचते हैं क्या हमारी पत्नी गई है दूसरे के घर में। So the gopas thought, my wife has gone to someone's house and she's coming back. She went to do something, but she'll be back quick. They are on the way, but actually so much time had passed, and still the husbands were thinking, they're coming back. For how long? How many nights of Brahma, Krishna and the gopis, they were performing pastimes? साधन सिद्धा गोपी जो है, साधन सिद्धा गोपीज जो गोपियां माने जो गोपी देह प्राप्त करके रासलीला में जा रहे हैं, the gopis were in perfection and were going to the Rasa Leela, so they were stopped. साधन में
सिद्ध हो गया, Some gopis who had already attained परिपक्व हो गया, perfection in the नित्य sadhana सिद्ध गोपियों की संग प्राप्त कर लिया, and had also associated with Nityasiddha gopis. साधन में सिद्धित कर लिया। So first of all, they had to be perfect in the sadhan. They had already got Swarupa again, नित्य सिद्ध गोपियों की knowledge of their form of their soul. And second point, they also got association of Radha, Lalita, Vishakha, the Nityasiddha gopis. So these gopis specifically, उन लोग के एक मूर्ति उनके घर में, yes, then Jogamaya kept one murti, one like statue form of these gopis in their house. Another form of these gopis in their house. और उनको अपने नित्य, उनके नित्य स्वरूप में वो गोपियां, And in their Nitya उनके लिए Swarupa, कोई बाधा नहीं हुई। तो these gopis went to the rasa, so they didn't have any obstacle. नित्य सिद्ध के संग के फलस्वरूप उनके किसी Because they had association of the Nitya Siddha, there was no obstacle for them, है। for this sadhana siddha. अभी जिस गोपियां तो शरीर तो प्राप्त किया, So that gopi who attained the body, she's doing bhajana sadhana, उनकी परिपक्वता नहीं, but yet she's not mature. साधन की परिपक्वता नहीं Her sadhana is not mature. है। और दूसरी क्या है, वो संत गोपियां अभी तक पूर्ण रूप से नित्य सिद्ध, Or also maybe they haven't had the completely the association of the Nitya Siddha. है। उसी गोपियों के लिए क्या कहते भगवान, जो मैंने क्या की So for them, घर Jogamaya में रख दिया, kept them in the house, रह जाता है, kept them in the house. है। So this is for them actually. आज उनकी वो समस्त गोपियों के क्या की, उनके सास ससुर आदि So all this रोक दिए, क्यों अभी नित्य संग नहीं हुआ? mother-in-law, father-in-law, they stopped them to go out भजन की because क्या बोले, they hadn't, they were not still, they weren't yet mature in their prema. हाँ सुन, That's why. ये समस्त विचार दे रहे हैं, So all these conceptions here. है। ब्रह्मरात्र वावृते वासुदेवानुमोदितः अनिच्छन्तो जजुर्गोप्प Verse 38. गृहाण 38. प्रिया 38. सुखदेव गोस्वामी पाद करने लगे, Sukadeva महाराज Goswami परीक्षित, told, Hey Maharaj ब्रह्मा Parikshit, की रात्रि बराबर after an entire night of Brahma had passed, ब्रह्म मुहूर्त Lord Krishna advised the gopis to return to their homes. गोपियों की इच्छा Although they did not wish to do so, लूटने नहीं the थी। Lord's beloved गोपियों की consorts इच्छा नहीं, complied घर with his में command. लूट So the करके gopis didn't want to come back to their houses. फिर भी भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा से अपने But अपने घर चली They गई। anyway they came back to their house following Krishna's order. आज सुनिए, इतने समय तक भगवान So for such a long time they were together with Bhagavan, performing many pastimes. के साथ प्रेम विहार आदि के Amorous pastimes. क्रीड़ा कौतुक आदि किया, Many kinds of leelas they performed, but still उनकी इच्छा नहीं है they didn't have the कृष्ण desire के छोड़ करके चले जाए। to leave Krishna and go away, go back. ब्रह्मरात्र उपावृते वासुदेवानु अनुमोदिता अनिच्छन्तो जजुर्गोप्प स्वगृहान भगवत प्रिया, भगवत प्रिया। वो समस्त भगवान के जो प्रियजन, जो माने गोपियां जो So the है, gopis are very dear to उनकी इच्छा नहीं Bhagavan. है, अनिच्छा They didn't want to छोड़ go करके जाए, to go back. है। बोले भगवान के साथ कितने समय तक विहार किया For how much time? For how long they were with Krishna performing pastimes? For how long? ब्रह्मरात्र, Brahmaratra, night of Brahma. आज की अनेकों रात तक, Actually, for many nights of Lord Brahma, many nights. बहुवचन दिखा रहे हैं पर Is in the plural. ब्रह्मरात्र शब्द के द्वारा So the word Brahmaratra यानी कितने ब्रह्मा जी के indicates रात्रि plural. Many nights of Brahma. है। Who knows how many? देखो हजारों साल तक यदि हम For- मत लोग के विचार आदि करें, So if you analyze according to the conception of the moons and वो समझते हैं planets कि or यहाँ कृष्ण के Earth, साथ प्रेम विहार करें, तथा for thousands of years they were playing Raslila with Krishna, but still they thought it was nothing. So this is कल्पते Kalpate Kanadam, Kanate Kalpatam. Even one moment with Krishna, meeting is like, कि कहा जाता है, एक कल्प कहा जाता है। sorry, coming back. ब्रह्मा One के day एक of Brahma is one Kalpa. हजार चतुर्युग। One Kalpa means 1,000 Chatur Yugas. Sata Treta Dapra Kali. और ऐसे यानी कितने युग बीत गया, माने कितने, So when they are with Krishna, तथापि गोपियां सोच रहे हैं, even though there are many yugas of Krishna, they seem like they feel like it's only a moment in the meeting moment. They stay with him a long time, but still they feel as if a moment. मान लगा लीजिए Try to imagine. ये
कितने हजारों साल For how many thousands of years गोपियां कृष्ण के साथ प्रेम विहार की, the gopis, they were किंतु performing गोपियां pastimes सोच with the रही हैं, मैं समान न हूं। the gopis, but still the gopis thought this is nothing, like इसलिए कहते such a little time. हैं ब्रह्म रात्रो उपावृते वासुदेवन अनुमोदिता है। जब तब स्वयं भगवान वासुदेव ने उनको क्या किया, Then Swami Bhagavan Vasudeva कहने लगे जाओ तुम लोग told अपने the घर gopis, में लौट करके you should जाओ। go back now to your house, come इसी go back. प्रकार गोपियां क्योंकि So in this way, the प्रत्येक gopis- चेष्टाओं से प्रत्येक संकल्प से केवल मात्र भगवान की प्रसन्न करना चाहती थी। They wanted to please Bhagavan only. भगवान के छोड़ करके क्यों नहीं जाती थे ना, भगवान के So प्रसन्न why करना they were थी। not going back? Because they wanted to please Bhagavan. But at the end, in the end, having been ordered, instructed by Lord Himself, अपने वे अपने अपने घर चली गई। the gopis, they came back to their house eventually. अब ये अंतिम So now the श्लोक last verse. श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद So in this verse, क्या दे Sukadeva रहे Goswami हैं? Pada, he is saying, कंक्लूजन दे रहे हैं he's giving the conclusion here रासलीला की कथा of the अंतिम Rasalila श्लोक में Katha, जाकर। in the last verse. हैं? क्या दे रहे हैं? What he's saying? विक्रीतं ब्रजवधूम इदं च विष्णु, विक्रीतं ब्रजवधू इदं च विष्णु, श्रद्धान्वितो अनुसन्नात् अथ वर्णेदज भक्तिं परां भगवती पदिलभ्य कामं हृदुगम आसु अपयनोत्य अचिरेण धीरा, विकृतं ब्रजवधू इदं च विष्णु। हे परीक्षित, जो धीर पुरुष ब्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस Anyone who faithfully hears or describes the Lord's playful affairs with the young gopis of Vrindavan will attain the Lord's pure devotional service. Thus he will quickly become sober and conquer lust, the disease of the heart. शीघ्र अपने हृदय रोग को अर्थात काम विकार से छुटकारा पा जाता है, उसका काम भाव सदा के लिए नष्ट हो जाता है। इस कथा की श्रवण की महत्व This verse is describing the glories of listening to Rasalila Katha. इस श्लोक के द्वारा क्या द ग्लोरीज ऑफ लिसनिंग है रासलीला कथा। Glories of listening, Rasalila Katha. इस एक ही श्लोक में कह रहे हैं क्या, So this one verse explains. विक्रीतं ब्रजवधू इदं च विष्णु, श्रद्धान्वितो अनुसन्नात् अथ वर्णेद जो भक्तिं परां भगवती पदिलभ्य कामो हृद्रोगम आसु अपरिणति अचिरेण धीरा। कितना सुंदर श्लोक में कहा This verse is so beautiful. है। विक्रीतम विशेष रूप से जो कीड़ा हुआ है, Bikritam is special. कीड़ा होता है और एक विशेष कीड़ा होता है। So Krida and Vishesh Krida, special like sports or activity. Vikriditam. अर्थात कृष्ण के साथ ब्रजगोपियों के जो चिन्मय Means Ras that Vilas this Adi. transcendental Rasa Leela that happened between Krishna and the gopis, इसी को कहा जाता है विशेष कीड़ा कहा जाता है। so these are called कीड़ा Vishesh विलास आदि होता Krida. है। So a special. विशेष विलास आदि क्या है? Okay, so there's in this world there's like vilas, these let's say affairs or something like that, or a relationship, or रास विलास आदि क्या है? but from Krishna this is उनके special, हस्त it's different. धारण करके नित्य आदि करना, Like आलिंगन dancing, चुम्बन आदि embracing, kissing. पथ अवरोध करना। पथ अवरोध समझ लो, गोपियां आ रही हैं, कृष्ण दो हाथ से So the gopis are coming and Krishna रास्ता को रोक देते हैं। obstruct their way, opening his two उनके arms. साथ अनेक प्रकार के प्रेम So many विहार kinds आदि of special loving pastimes तीन that नदियों के happen द्वारा between Krishna and the शिवमन के जो gopis. है, Like हरण with कर his ले रहे हैं। sidelong glance, he was actually stealing ये their सब hearts. इसे विकृतं कहते हैं। This is ब्रजवधू Bikriditam.
यह ब्रजो बोधु का special द्वारा बोधु शब्द के spots of Krishna. Here in this loka says spots, not special विवाहिता थी, mixing of Krishna and the gopis. Actually, Vrajavadubhi indicates that the gopis were married. कुछ जो है गोपियां अविवाहित थी, जिसे कन्यका कहा जाता है. Some gopis they were not married, so this is called Kanya. कन्यका, Kanyaka, sorry, Kanyaka. शब्द है, जो विवाहित नहीं, Those who were not yet married. ऐसे भी स्त्रियां भी थी. Some girls were like this in the Ras कुछ Leela. विवाहिता थी, कुछ अविवाहिता थी, है, कुछ Some were married, some not. अनुरा क्या बोले, अनुरा So Anurura is one category of the gopis, married or not. किंतु यहाँ पर है समस्त गोपियां क्या था, But all the gopis they were अप्रसूतिका थी. aprasutika. They didn't have babies, none of them. अप्रसूतिका मतलब What is aprasutika? कोई किसी के बाल बच्चा नहीं. They had no babies. No one had babies. Not one of them had babies. टीकाकारों ने ऐसे वर्णन The करते commentary explains हैं, किसी गोपियों की पुत्र कन्या आदि नहीं, that none of those gopis had babies. इसलिए कहा जाता है कि So this is अप्रसूतिका. called aprasutika. प्रसूतिका माने जो प्रसव किया. Prasutika means someone who has delivered. माने Aprasutika is someone who has never delivered. Like someone who has no kids, like has no, ये एक विशेष वैशिष्ट्य. not had the baby. यदि कहो यदि किसी को बाल बच्चा नहीं था तो गोपियां क्यों कह रहे हैं. But if you say, why the gopis, if you say they have no kids, why the gopis are mentioning in this verse of the Gopi Gita, they left their house, their husband, their sons, this loka of the gopis, they are saying, Suta means गोपियों की sons, so from this loka we see that actually gopis they had sons and daughters. Maybe someone can argument this. भातृवंदवा नति विलंगते अंतच्युतगतः, पति सुता नया भातृवंदवा, भाइयों को तो छोड़ करके आया. पुत्र कहने पर Their पर गोपियों के पुत्र brothers, ये अपना पुत्र के लिए नहीं, husbands. Actually this putra in this sentence is not their own kids, sons of the gopis. It's the offspring or like the babies, sons of some relative of the gopi. And because the gopis sometimes they would serve these babies also as like if they were their own. Like she was feeding them milk also. दूध पान करा रही है. तो कौन सा खुशी वहाँ पर ये वो समझते हो क्या करें गोपियाँ ना बच्चा को दूध पान करा रही. So the gopis they were best like they were feeding milk to the baby. पुत्र को But actually was the अपने पुत्र मान करके, so they saw these other sons of other family members as their own and also serving जहाँ पर them. लिखा हमारे टीकाकार विश्वनाथ जीव गोस्वामी लिखते हैं जहाँ पर पति सुत नया, So ये सुत शब्द जो है this word suta शब्द के द्वारा ही प्रतीत होता है गोपियों की actually have to understand that the gopis पुत्र कन्या आदि नहीं था. they are not referring to their own kids. दूसरे को पुत्र कन्या के अपना पुत्र कन्या के मान करके पालन पोषण करते. So they because they used to take care of these other person's kids, like seeing them as their own also. इसलिए कह रहे हैं विकृतं ब्रजबुद्धि इदंच विष्णु. यहाँ पर बोधु शब्द के द्वारा वो समस्त गोपियां जी So विवाहिता थी, इसके द्वारा स्पष्टीकरण कर दिया है ना. उसके बोधु को आकर के संबोधन करते हैं. so they are being called bodhu. आज समझिए है नहीं. और कुछ दिन होने के बाद बोधु नहीं कहते हैं. But after some days you are not called badhu anymore. So just as when you get married, then your wife comes to your house, then we call badhu. Like how is your like new bride? Like this bahu is so beautiful. बधु शब्द प्रयोग होता है. The word badhu we only use for the recently married brides, wife that just came to the house for the first time. So we call badhu. जब पुराना हो जाता है तब ये शब्द नहीं रहता. But when it's old, then this word is not there. क्योंकि अभी पहले हो गया क्या, पहले था क्या
क्या बदनी? Because सुहाग remember, चांद बदनी the first face is like the face of like a moon. है सुहाग चांद बदनी धनी नाचत देखी, कहते ना सुहाग चांद बनी धनी ना, तो चांद बदनी थी, अभी चांद बदनी नहीं गया, अभी क्या हो So गया? first is face like a moon, सूरज बदनी हो गई, then now, but now it's already face like the sun. सूरज बदनी हो गया, Suraj इसलिए Badani, बौद्ध शब्द the नहीं face कहा like a जाता। और फिर sun. कुछ समय के बाद क्या हो जाता Then in है? this moment you don't call Vadu. Vadu is only when it's like face like the moon. वो भी सुहाग चांद Then बनी becomes हो like the जाता है। face सुहाग चांद बनी like the रहता है, जब नई volcano. नई बहू आती है ना, है उसके देखने के लिए लोग आते हैं, हैं? So people बहू के come देखने to के लिए see हाथ में generally पैसा the देते हैं, new bride. They give even some money in their hands. कुछ नियम होता है, There are some rules. सांसारिक लोग में ये सब नियम होता है, किसी की बहू देखने के लिए जाओ खाली हाथ में Like मत there's जाओ। some rules in this world. Like if you go to see a Badhu, like a new लोग bride, कुछ फल देते हैं, you give something to her. Don't go empty-handed. और Like कुछ give पैसा some आदमी fruits or देते हैं, some खाली हाथ money. में थोड़ी आता है। Don't people don't come empty-handed to see a new इसलिए bride. उसके कहा जाता है सुहाग चांद बदनी। So this is called Suhag Chandan विवाह Badini. के बाद भी जाते हैं, क्या करते हैं? But after them, हनीमून करने के लिए, and people get married and they go to the honeymoon. Do you understand? What did I say? हाँ हनीमून Honeymoon. है बस। तो यहाँ पर भी करे बोधु शब्द किस लिए कह रहे हैं? विकृतम ब्रजबोधु इदंच विष्णु, ये बोधु शब्द के द्वारा So with यही this word प्रतीत होता Badhu, है it's been established that तो गोपियाँ all these gopis, है अभी अभी एक विवाह करके आई है, they had just recently gotten married. That's why the word Badhu was used. नहीं तो स्त्री शब्द हो जाती, Otherwise they would use the word Stri, पत्री शब्द हो जाती। woman, or the word बोधु Patani, शब्द wives. एक मीठा शब्द होता है, जहाँ The word Badhu is very sweet. यहाँ पर प्रयोग होता है। The word Badhu is very sweet. एक बधु शब्द होता है, One स्त्री thing is शब्द होता है, Badhu, another Stri, हाँ? like और पत्नी Badhu, शब्द recently होता है। wife, जैसे तुम्हारी पत्नी Stri, कैसी woman, and Patani, wife. So three different words. Like how is your wife? हो जाए, हैं? किंतु जहाँ पर बधु शब्द होता है, But when the word Badhu is used, When like for- recently bride, नवीन Missing विवाहिता bride. ऐसे लगता so it looks like Navin Vivahita, like someone who has recently gotten married. This word gives this meaning. विष्णु, विष्णु माने Vishnu means स्वयं भगवान Swayam Bhagavan. अनेक स्वरूप धारण करके उन वह समस्त ब्रजवधु के साथ प्रेम विहार किया Performed manifested many forms and he performed pastimes with all the gopis at the same time. वो समस्त गोपियों के Using the Rasa साथ Leela, Krishna, है अलावत चक्र के भांति he played with all the gopis just like Alak लेकर के जैसे Bhat Chakra ne. एक ही आग दिखाई Just like if you take a दिखाई पड़ता रहता है। golden torch and you move it in circles, it will look like as one circle of fire only. In the same way, Krishna, he played in danced the Rasa Leela very quickly. For 100, like millions of ऐसे प्रतीत gopis. कर देते हैं, समस्त गोपियां सोचते हैं क्या कृष्ण केवल मात्र मेरे ही साथ है, And इससे उनको क्या हो जाता amazingly, है? all the gopis thought Krishna is only with me. That's why they felt so bhagamad. हैं? They felt so much proud Completely because intoxicated they're completely with their intoxicated, own proud great fortune, because of their own great fortune to be dancing with Krishna. intoxicated with Completely their intoxicated great fortune। with their great fortune. अहो कृष्ण केवल मेरे साथ ही, Oh, Krishna is only playing with me. देखो हैं? किंतु कृष्ण इतने द्रुत गति से But very Krishna, quickly, he goes he was one very to another gopi. quickly going from one gopi to another gopi. So for this regard, here Shukdev Goswami Pad use this word. So that's why Shukadeva Goswami used this word Vishnu. Vikritam Brajavadhu Vidancha Vishnu। यही जो कृष्ण ब्रजनंदन श्याम सुंदर, This Krishna Brajananda Shama Sundara, अत्यंत द्रुत गति से very quickly he goes from one gopi to another and all gopi. the gopis are so much intoxicated And all the gopis are so much intoxicated great with their own great fortune. and महान सौभाग्य मद में सब मत हो गए। They are completely intoxicated by the pride of their good fortune. ऐसे कथा को कोई श्रद्धा के साथ If someone with faith glorifies this katha, अनुसृणात
अत्यंत श्रद्धा के साथ with so much faith, निरंतर श्रवण करते रहे। continuously उन listen. शब्द के कई अर्थ होता है। The word anu has many meanings. अनुसन्नाथ होता है और Anu means under the guidance. अथ वर्णित जो ऐसे गुरु के मुखारविंद से, वैष्णव के मुखारविंद से ये समस्त कथा श्रवण So if you listen to all this katha from the mouth of Guru, bona fide Guru Vaishnavas, then actually, and after listening, also realize this. Not only listening, but actually realizing also. Have to understand. Anubhav, have to realize also all that. गोपियों के साथ जो प्रेम विहार आदि की This इसी को amorous pastimes of Krishna and the gopis, you have to listen, then realize them. मन के साथ क्या होता है, अनुभव करना चाहिए, है? ऐसे अनुभव करके क्या करते हैं? After realizing, then you can describe them. Varnet also. वर्णित अनुभव हुआ नहीं, अब वर्णन करते So आए, you are not still, you haven't realized. नुकसान आ जाएगा। Then you go to, you speak about them, then misconception will वर्णन come. कौन करेगा? So who can describe these kathas? इसमें अनुभव है, Those who have realization of them. है? हवा ठंडा है, हवा ठंडा लग रहा है। The wind is अनुभव cold. करके बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? So you are saying because you are feeling, then you are अभी saying. ठंडा लग रहा है, बहुत सुंदर, पंखा Now? का हवा बहुत है, Now अच्छा लग रहा it's है। cold. I'm like, काल में I'm स्नान के enjoying this पश्चात after bathing. जला दिया, This अन्नी करके जब fresh बैठ wind जाते हैं, of सो the जाता है। fan. You put अच्छा लगता tilaka, है। you chant हवा your मीठी Gayatri. मीठी हवा ठंडा Then चल you take some rest. Then you feel that रात भर fresh गर्म था wind. वहाँ। During the night was so रात को hot. काल हो जाता है। We were तो sweating. काल में But थोड़ा early in the ठंडी morning हो जाता है। becomes like a little bit more fresh ऐसे air लगता during the है, morning. उस समय सो जाता है। So you think, oh, I will sleep for a while now. अच्छी लगता है। Because now it's like cold. Cold in the, like good, it's fresh. So it's your body enjoys this सुबह weather हो now. रहे कि नहीं अभी? Isn't it? You felt क्या some लगता है? happiness or नींद not now? That's why you feel some sleepiness. सुंदर। Because the weather is very cool now. It's क्या nice. मंगल आरती करते 4:30 बजे घंटी बजा देते, 4:30 a.m. they are ringing the bell for the Mangalarati. 6 बजे आरती करते, 4:30 बजे आरती करना शुरू कर देते। So 4:30 the arati नींद starts. नहीं आई, During whole night you could not sleep. पिछला में तरस कर You're just sweating and नींद sweating. जब हमारा आना शुरू So कर when you देता है, finally घंटी बजा देते can get some sleep, then they are ringing the bell. It's difficult or not? हैं? आप क्या सोचा, आप बताओ? What do you think? Tell me. हैं? मठ में रहो तो आपको पता लगेगा ना। If you live in the temple, then you realize. रहो, सोते रहो, बोले If you stay in your house, then you can sleep no problem. हैं? कौन घंटा मारता है? Who will ring in a bell? But here in the temple, बस जिस समय नींद आता है ना, when you उस समय finally घंटी get some बजा sleep, देते हैं। then they start ringing the bell. हैं? जल्दी जल्दी करके प्रतिकृता आदि Then very quickly you get ready, अटेंड करना, फिर attend the Mangalarati, हैं? गायत्री मंत्र जब करने से लगते हैं then chant नींद your पूरा नहीं हुआ, थोड़ा Gayatri mantra. So when you're chanting, you feel some sleepiness also because you couldn't sleep at night. Yeah, this takes place. This happens. मेरे कहने It के happens. तात्पर्य यही है जो हम जो कथा So what I want to say, विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्नाथ, श्रवण कैसे होती, अत्यंत How you should listen. कहा गया, श्रद्धान्वितो with faith. है। संस्कृत में यहाँ पर केवल श्रद्धा नहीं, So श्रद्धा not के only faith, अत्यंत गाढ़ श्रद्धा के but साथ very strong अनुसन्निध faith. होता है, अत्यंत गाढ़ श्रद्धा के साथ है। Deep Have to listen with deep faith. अत्यंत गाढ़ श्रद्धा के साथ क्या करो, श्रवण करो, Listen. है श्रीनिवास अथवा वर्णे, इसके बाद क्या करो, Then वर्णन करो, you describe है। that katha. हाँ सुनिए, You गाढ़ understand? श्रद्धा के साथ श्रवण, So इसके if बाद you अनुभूति हो listen जाता with है, a lot of faith, then you get realization. कथा को वर्णन Then you can describe this katha as well. परांग भगवती प्रतिलब्ध कामम हृदरोगम आसु अभंति अचये नदी। यहाँ पर एक विचित्र बात हमारे विश्वनाथ There is something very interesting that Vishwanath Chakravarti is saying. What he is saying? भक्ति परांग भगवती प्रतिलब्ध कामम, क्या होता है उसके, पराभक्ति को वो प्राप्त कर लेते हैं So the person attains parabhakti, और साथ ही साथ and at the same काम time, भी हृदरोग क्या हो जाता है, all the lust and anger, दूरीभूत हो जाते हैं, they are removed. ये कहते जा रहे हैं।
तो यहाँ पर एक हमारे विश्वनाथ But चक्रवर्ती here Srila Vishwanath Chakravarti is saying, look, भक्ति परांग भगवती, भगवान में क्या हो जाता है, पहले first of all, भक्ति आ जाता है। Parabhakti will come towards Lord. What is एक भक्ति है, Parabhakti? एक पराभक्ति है। One thing is Bhakti, another is Parabhakti. पराभक्ति जो है कृष्ण में श्रेष्ठ भक्ति। So Parabhakti is the highest devotion to Krishna. क्या सेवा? Bhakti means seva. कामात्मिका जो भक्ति जो है So this Kamatmika Bhakti, वो उदित हो जाता है। this will manifest. कितने वर्णन करते जा रहे हैं? क्या उत्पन्न हो गया? कामात्मिका भक्ति। So first Kamatmika Bhakti will come. अर्थात नित्य सिद्ध गोपियों के हृदय में जो कामात्मिका भक्ति है, So this Kamatmika Bhakti from the heart of Nityasiddha gopis. भक्ति जिनके हृदय में उदित हो जाता है। सिंपल चीज। यह भक्ति करने से हर समय कैसा होना चाहिए? So Bhakti here means seva actually. देखो कैसे So आश्चर्य की बात this can manifest also in the heart of the jiva. So this is है। amazing. साधारण भक्ति नहीं, Not a normal Bhakti, Parabhakti. वर्णन होते जा So रहे this हैं। Parabhakti actually means that which kind of Bhakti? कामात्मिका भक्ति जो Kamatmika Bhakti हृदय में है। that are in the hearts of the Nityasiddha gopis. This Kamatmika Bhakti can manifest in the और heart. उस भक्ति के द्वारा हम क्या करते हैं? With this उनके Bhakti, अनुगत्य में सेवा हम करते हैं। we can serve under their guidance. ये कह रहे हैं। बोले कैसे कैसे संभव हो गया? How is it possible? बोले यही तो है कथा सुनने की, रासलीला कथा सुनने की एक विशेष This is फलश्रुति the बता रहे हैं। special fellowshruti of Rasalila Katha. एक संबंधात्मिका भक्ति Special और एक होता है result of listening. कामात्मिका भक्ति। So Rasalila Katha. So there is Sambandhatmika Bhakti and Kamatmika Bhakti. रुक्मिणी सत्यभामा आदि में जो ब्रज में जो क्या Rukmini Satyabhama, the queens of Dwarka, they have Sambandhatmika Bhakti. ब्रज में भी दस सख वात्सल्य आदि सब संबंध आत्मिका So all those who have Dasa Sakavatsala समझ में आया? in Braj, they have some Samandhatmika Bhakti, but Kamatmika, only the gopis they have this. गोपी छोड़कर किसी में कामात्मिका भक्ति। Except for the gopis, no one यही has. कामात्मा भक्ति के एक आबाद फिर दो विभाजन करके So दिखा रहे हैं। another two more other एक divisions है क्या? from this Kamatmika Bhakti. One, Tat Tat Bhav Ichamai Bhakti, और दूसरी क्या? and another, दूसरी क्या? what is the second one? संभोग इच्छामयी भक्ति। Sambhog Ichamai Bhakti. Look, संभोग इच्छामयी भक्ति ललिता आदि में this from like Lalita, they have this. तत्त भाव इच्छा भक्ति क्या And है? Tat Tat Bhav Ichamai Bhakti, वो समस्त भक्ति जो है एकमात्र राधा ही के अनुगत्य में ही होता है। only the guidance of Shrimati Radhika, they have this. हाँ सुन, Do you understand? राधा की वैकंत की निष्ठा होने के नाते So because they have one pointed devotion to Shrimati Radhika, one pointed nishtha, sorry, समस्त सखियों में क्या हो जाता है? one pointed nishtha to Shrimati Radhika, then all the bhavas of Shrimati Radhika reflect on these sakis और वो also. सब करते हैं। ऐसे सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। Very तो beautiful. अभी हम कथा प्रसंग यहाँ पर परांग भक्ति परांग So here- भगवती भक्ति परांग भगवती पतिरप्प काम, ऐसे पराभक्ति के पार प्राप्त करने के पश्चात क्या होता है? So after attaining this समस्त bhakti, काम को वो दूरीभूत कर देते। all the lust is यहाँ पर removed. श्लोक में होता है This और look समाप्ति explains. का क्रिया दिखाई पड़ रहा है As संस्कृत के Samatka अनुसार। Kriya, according to the Sanskrit, है क्या कार्य है? what is the. पतिरप्प कामम प्राप्त करके, So प्रतिरप्प Pratlabha शब्द Kama का means प्राप्त करके, after attaining. है क्या प्राप्त करके? After attaining what? पराभक्ति को प्राप्त करके, So they attain है Parabhakti, this highest devotion. क्या होता है Then what happens after attaining? ना? हृद रोग आदि ये सब Then the disease of the hearts, lust, anger, and everything is destroyed. समझ में आ रहे हैं? Did you understand? है मैंने कहा So I told, आप खा पी करके like after eating and drinking, समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? so करके क्या गया? आप चले गए। so Katha is over, finished, then you left. यदि कहा दिया So if you say, मैं खा पी करके okay, Gurudev is saying about the स्थान से चले गए। karke, like in Hindi, you say after doing that you go. पी करके So like after eating and drinking, then like after listening Harikatha, I left this place. After eating and drinking, कथा समाप्त नहीं हुआ, आपको क्रिया समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर कर्ता समाप्त नहीं कर रहे। Gurudev is saying actually इसके this, बाद क्या किया? न चला गया।
मैं खा पी करके चला गया। So after I ate and drink, I left. Suppose this sentence. So when you say after drink and after having drunk इसके बाद क्या कर गया? and eaten, तब I left. संपूर्ण होता है। Means you can, if you analyze this sentence, this part after eating, this is like a sentence that needs the other sentence. You cannot say alone after eating. Like after eating has to complete that sentence with I left. So he said, oh, after attaining bhakti, so what will happen? After attaining bhakti, then the coming krodha and the disease of the heart will be destroyed. Means first you have this disease of the heart, then after attaining parabhakti, then the disease of the heart disappeared. Did you understand? So you were hungry, then you ate. Okay, after eating, then my hunger disappeared. Okay, so first you are hungry. In the first place you are hungry. Before eating you were hungry. जब आपने भोजन कर लिया, then after you ate, क्या हो गया? then hungerness your hungerness go away. तो इसके मतलब क्या है? थोड़ा दिमाग लगा दीजिए। So try to use your brain to understand it very easily. पहले आपके क्या था? भूख था। अब भोजन करने के बाद भूख चला गया। So first you're hungry, then you ate, then your hunger disappeared. So in the same way, Vishwanath Chakravarti is also saying. First you had the hridrog, disease of the hearts, like lust and anger. First you had it. What is the hridrog, the disease of the heart? कामं hridrogam. hridrog आपके lust. hridrog से क्या? जड़ काम जो है। So the material lust. वो क्या हो गया? तो यहाँ this was destroyed. So a question arises. भक्ति तो तब उदित होता है। But bhakti only appears when our heart is very pure, right? सर्वाधि बेनीर मुक्तम तत्परं तो निर्मलम हिसिकेनो हिसिकेशो सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति हमारे हृदय में कब उदित होता है? When bhakti will appear in our hearts, when our hearts चित्त जग निर्मल हो जाता है, are pure. हमारे हृदय में काम वासना आदि So if we have lust in our hearts, lust, then bhakti will not appear. जावत पिशाचिनिधि वर्तते तावत भक्ति सुखस्तत्र कथम बुद्धे भवेत्। प्रमाण है, शास्त्रीय प्रमाण। The evidence of the scriptures explain. यहाँ पर कह रहे हैं ये नहीं। But he is saying no. Even you have the lust in your heart, even though you have it, काम रोग रहते हुए even although lust is still in your heart, you will attain parabhakti, the highest bhakti. How is it possible? समझ में आ रहा है? Do you understand? Do you get it? Because generally we say where there is Krishna, there is no, like where there is the sun, there is no darkness. Where there is Krishna, there is no lust. Just like the sun and darkness cannot remain in the same place. So how come even though lust is still in your heart, how can you attain parabhakti, the highest bhakti? Vishwanath Chakravarti Pad explains in the commentary. Bhakting parang bhagavati padilappa kamam hidrogam asu apunati achirena dhira. कितना गुड़ तात्पर्य बता रहे हैं। It's a very confidential meaning here. साधक को क्या करना चाहिए? So the sadhaka must, first of all, you have to purify your heart, control your you get rid of the lust. Suppose if there is a pot full of mud, you cannot bring water of the Ganges, fetch water of the Ganges in a pot which is full of mud. So first of all, you have to clean that pot, the clay pot, remove all the mud from inside. All the mud which is inside the pot, you have to remove from inside. उस घड़े में कीचड़ भरा हुआ है, कहते जाओ इसके गंगा जल लेकर के आओ। तो क्या? Someone gives you a pot full of mud and tells you, oh, bring water of the Ganges. First you have to take out all mud, clean the pot, then you can fetch the water of the Ganges in it. But if your pot is full of mud, you cannot bring the water of the Ganges inside it. But here saying no. First you have lust and anger in your hearts, everything. Then parabhakti came. Something amazing. Huh? How is it possible? Bhakting parang bhagavati padilabha kam. पराभक्ति को प्राप्त कर। बोले कैसे? बोले ये अचिंत्य शक्ति है। You attain parabhakti. How possible? This is the inconceivable potency. This is the special falashruti, special fruits of hearing, the Harasa Lila Katha.
जैसे उदाहरण दिया गया, साधारण भक्ति में तो यही है लक्षण। Just like I told, this is the symptom of normal bhaktis. Generally, first you have to purify your heart. Generally, it's like that. तत्परितनम निर्मलम हिसिकेनो हिसिकेशो सेवनम भक्ति उच्यते। समस्त प्रकार के डेजिग्नेशन You have to कि क्या करो, छोड़ दो, निकाल दो। remove all the designations. Be free from all the designations. है। सबसे बड़े उपाधि हमारे पास कौन सा The है? greatest designation that we have is our Dhatma Buddhi. We think we are the body. है? है? आदि आदि उपाधि आदि समझते हो? You know what is Upadhi? जो मन के पीड़ा देते हैं उसके आदि कहा जाता है। Adi is called something that gives a burden to the mind or suffering to the mind. Adi Vyadi, like diseases and sufferings. व्याधि मन को पीड़ा देने वाले हैं। So something which gives सबसे मन को suffering to पीड़ा the देने mind. वाले को क्या What is the चीज़ है? topmost thing that gives suffering to the mind is the lust. है? इतना सहज में उसको निकाल नहीं It's सकते। not so easy to remove the lust from the heart, from the mind. बोले ऐसे देखो काम क्रोध आदि रह करके भी So if you still have lust and anger in other, भक्ति परांग भक्ति how can the person think the prema bhakti, param bhakti, this highest bhakti, how possible? विशेषण दे रहे हैं कौन सा भक्ति? पराभक्ति। So which bhakti? और Para फिर bhakti. काम काम के द्वारा फिर कह रहे हैं काम क्या है? कामात्मिका भक्ति। And kama, this श्रेष्ठ भक्ति है। kamatmika bhakti, this highest bhakti will ब्रज की come. जो है जो भक्ति के बारे में बताया, एक संबंधात्मिका भक्ति So the kamatmika of Vraj. और So I told. कामात I told in Braj there are two kinds of loves. Sambatmika bhakti and kamatmika bhakti. वही कामात्मिका भक्ति के अनुगत्य में भक्ति हमें प्राप्त हो जाते हैं। So you are in this bhakti under the guidance of this kamatmika bhakti. It's called kamanuga bhakti. क्या रहता है? So the eternal Brajavasis, they have kamatmika in their heart. और उसके वही भक्ति के अनुगत्य में सेवा कर रही है जो भक्ति कहते हैं। So if you- भक्ति हमारी प्राप्ति हो रहा है। Serving under the guidance, then you are in kamanuga bhakti. देखो इसलिए कहता है भक्ति परांग भगवती प्रतिलब्ध। एक श्लोक दे यहाँ पर प्रतिलब्ध के द्वारा शब्द के So, देते हैं। लाभ This करके word pratilabhya, pratilabhya means after attaining. प्राप्त करके So pratilabhya means after attaining. हो रहा है। So this asamapika kriya means it's like subordinative clause or how to say like कौन सा a भक्ति प्राप्ति हुआ? incomplete clause. Like you need the complementation. Like after attaining pratilabhya, come pratilabhya what? भक्ति में प्राप्त हो रहा है। So after attaining this bhakti, then your heart will be pure और उससे क्या from the lust. हित रोगम आसु अपरिणति अचिरेण धीर। So pratilabhya kama, after attaining what? This kama in this verse actually means kamanuga bhakti. After attaining kamanuga bhakti. काम क्रोध आदि दूर होने पर भक्ति का हम प्राप्त करते हैं। So वो भी साधारण भक्ति। generally we, after being free from anarthas, then we attain a normal bhakti. But the para bhakti, kamanuga bhakti, how could you attain it? अचिंत शक्ति से लक्षणम। So this is the Achinta Shakti, inconceivable potency in this हैं? Rasalila Katha. देखो कितने सुंदर व्याख्या। So beautiful this commentary, this explanation. ब्रज भक्ति के अनुशीलन में एक विशेष वैशिष्ट्य So this is the speciality of उसमें विशेष करके ये follow, दूसरा की practicing to कथा attain Vraja Bhakti. श्रवण के फलस्वरूप So because if you listen to Vrajalila Katha, sorry, Rasalila Katha, you see what happens. If you listen to Rasalila Katha, श्रद्धान्वित हो if you hear, of course, with a strong faith, माने निरंतर Shrambanito, and also Anu means incessantly also. अनु शब्द के पहले होता है निरंतर So first Anu means incessantly. है दूसरे निरंतर माने अनुगत्येन Another श्रवणम। point also is under the guidance also, hearing under the guidance. अनु अनु शब्द कहते हैं गुरु मुखाल शृण्वत्। Anu means listen from the lotus mouth of the Guru. Vishwanath Chakravarti also explains. उत्तम उत्तम महाभागवत से So you श्रवण listen के लिए ही विधान from Uttam दे Uttam रहे हैं। Mahabhagavat. है जिसके हृदय में काम क्रोध है Those who have lust and anger in their hearts, if you listen to Rasalila Katha from them, then what will happen? Actually, lust and anger will increase even more. है ये भी कहते जा रहे हैं जो समस्त प्रकार के काम क्रोध से निर्मुक्त हो चुके हैं Those who are free from all kinds of lust and anger, है मुक्त महापुरुष this Mukta Mahapurush, liberated उनसे समझ soul, if चाहिए। you should ये listen मुक्त from महापुरुष के भी him. तीन प्रकार का हैं The Rasalila Katha, and there are three kinds of Mukta Mahapurush. मध्यम कनिष्ठ गौण साथ Uttam, Madhyam, Kanishta. What are the names? गधा सत्य
You are all asses, like donkeys. Like, भगवत पार्षद देह प्राप्त, so Bhagavad Parshada Deha Prapta. भगवत पार्षद देह प्राप्त, उत्तम उत्तम महाभागवत, This is Uttam Mahabhagavat. साक्षात भगवान की पार्षद He's a directly associate of Bhagavan. है, ऐसे समझिए, Do you understand? भगवत पार्षद देह प्राप्त, ये उत्तम उत्तम महाभागवत। It's a Uttam Mahabhagavat. जैसे कि उस उदाहरण कौन है? Who's the example? हाँ? नारद ऋषि, Narada Rishi, हाँ? the best among the associates of Bhagavan. भगवत पार्षद I mean, the very prominent associate of Bhagavan. Bhagavad Parshada Narada Rishi. एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड, Eternal associates of Lord. पार्षद, पार्षद कहा जाता है, इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड, भगवान के नित्य पार्षद। दूसरी क्या है? Second, मध्यम, Uttam क्या बताएगा? Madhyam. Who is the example? निर्धुत कषाय, Nirduta Kashai. उनके हृदय में संसारी किसी प्रकार कषाय नहीं है, बाधाएं नहीं है। Someone who has no any kind of impediments, material impediments. Who is the example? Shukadeva Goswami. है? आज सुखदेव गोस्वामी जैसे निर्मुक्त Shukadeva Goswami is someone completely free. और उत्तम महाभाग, Uttam Mahabhagavat. ये भी सब उत्तम महाभागवत है। नारद ऋषि भागवत, So all of them are Uttam Bhagavat. Like उत्तम उत्तम महाभागवत। Bhagavad Parshada Narada Rishi, he's the Uttam Mahabhagavat. और दूसरी क्या दे रहे हैं? And उत्तम मध्यम, ये भी भगवत भगवान Uttam की Madhyam, अत्यंत प्रिय जन है सब। they are all very dear to Bhagavan. So example Shukadeva Goswami Pad. तम दैवानि विरह गात राजभाव पुत्रेति तन्मय तरुभिनेदु तं सर्वभूतो हृदयं मुनि मानतोऽस्मिन्, है जिसके वर्णन होते जा रहे। सुत गोस्वामी पाद, सोनकाद ऋषि उनके निकट Suta Goswami की महिमा कीर्तन कर रहे हैं। glorified his Guru Shukadeva Goswami. So the rishis headed by Sonaka Rishi. पुत्रेति तन्मय तरुभिनेदु तं सर्वभूतो हृदयं मुनि मानतोऽस्मिन्, किसी संसार में किसी वस्तु को मोह नहीं रखते हैं, Not attached to anything from this world. है? ना आगे ना पीछे, Nothing is behind. कारण और मोहिवा Nothing is in front of him. Actually, only your mind is the cause of liberation. Sorry, not your mind, the moha, the attachments, के कारण is the cause of और मोह ही क्या bondage. And also, attachments is also the cause of liberation. है? No, sorry, moha? मोह शब्द क्या है? अटैचमेंट, Yeah, attachments, like इल्यूजन, the illusion, इल्यूजन और कुछ नहीं nothing else. है। यथा किरीट बंदर का बंदर भांति, और कुछ नहीं। बंदर इल्यूजन में पड़ गया है, और किरट यानी तोता भी इल्यूजन में पड़ जाते हैं। तुलसी For example, just let's give the example that to catch the monkey, क्या करते हैं? जैसे the क्या करते हैं? आलू दिखा देते हैं। hunter shows some उस आलू के potato to जो him, क्या बोलते हैं? सुराई जो है, and they put the a potato in a clay pot, which is has very narrow शिकारी and क्या करते हैं? like a hole to enter, बैठा रहता है। like inside the clay pot, to come inside the clay pot, there's a small narrow सुराई के मुंह देखा ना, छोटा है, mouth, like a narrow देखा hole. Have you seen a surai? Bring a surai here, bring a surai, come on. है? Surai is one kind of clay pot, very big, like round shape, but there's a very narrow, जो ट्रांसलेट विदेशी लोग समझ, the Westerners, they are understanding? So it's a very round clay pot with a very narrow hole to put things inside and out of the clay को pot. यहाँ पर रखो, ये सुराई है, You see, this is a surai. हैं? बंदर के हाथ छोटे ना, ऐसे करके जब चले So जाते you see, the monkey's hand is very small, so can enter inside this surai, this pot, clay pot. मानो छोटा बंदर के हाथ चला जाएगा, नहीं चला जाएगा,
है, यहाँ पर इतना आप छोटा आलू के डाल दो। So if you put some small potato inside and you show to a small monkey, you see, he will put his hand inside. पकड़ लेता है, जब मुट्ठी भर कर लेता है, ये then when he catch the potato, but when he's making like a fist catching the potato, he will try to take out his hand, but his hand won't come out because of the fist position. The monkey is so foolish that he's thinking the potato is catching him, like holding him, but it's not true. वो बाहर निकल नहीं पाते, वो And so he cannot take out his hand, so he's like screaming. This is one like the illusion. This is an illusion created in his mind. He is thinking the potato hold my hand. है, ये आलू ही जो है मेरा हाथ को पकड़ करके रखे हैं, और इतने समय शिकारी आकर के बंदर को पकड़ लेता है। Then the hunter comes and catches the monkey because the monkey is bewildered, thinking that potato is catching him. He could have just released the potato and taking out his hand outside the pot. इसलिए तुलसीदास ये उदाहरण है, जीव के बंधन के कारण क्या है, ने इल्यूजन सृष्टि करना, माया से इल्यूजन सृष्टि। So the job of Maya is just to make this illusion. These types of illusion. और दूसरी क्या है, क्रीट भांति। क्रीट क्या है, तोता। तोता के पकड़ने के लिए Another example is the parrot. व्हील बनाते हैं। So they make one kind of wheel to catch the parrot. उसके बीच में एक छेद करके they make a hole in the middle, they make like a wheel moving, and on top of this wheel they put some pomegranate seeds. Do you understand? और वो तोता क्या करता है, so the parrot, वो व्हील चक्की के ऊपर बैठ जाता है, he sits on the top of the wheel खाने के लिए, to eat the pomegranate seeds. व्हील के ऊपर बैठने के But because he is sitting on the wheel, immediately the wheel turns, spins, you know, and then the parrot becomes afraid, अपने पंजा के, and then the parrot with his claws he holds tight in the wheel, and he's like tan tan tan, because the parrot is afraid. He's thinking the wheel is catching him and pulling him, but actually he himself is catching the wheel. He does not see. It's like an illusion because it's so sudden. Everything is so sudden because the wheel moves suddenly, no? So he thinks the wheel is catching him, but it's not true. Maya is also doing this. Activities of Maya. Maya के कार्य क्या है? What is the activities of Maya? माया के कार्य इल्यूजन सृष्टि करना, creates this illusion, you know, कुछ नहीं, nothing else. It creates this illusion. शास्त्र कहते हैं मोहिव बंधने कारणम और मोहिव मुक्ति भी कारणम. So the Shastra explains the moha, this illusion, is the cause of our bondage, attachments. And so if we give up this attachment, so we'll be free from the bondage. We'll be free. This is simple. संसार के बंधन के कारण तो ही दिखा. What is the cause of our attachment in this world? Is this? कौन मेरा माता पिता है, कौन who is my mother, who is my father, who is my friend? आंख बंद करने से सब हम छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे. So कितने राजाधिराज महाराज आए, how many great kings have already come in this world? How many have left? Where is Ram? Where is Krishna? Everybody came to this world, they left. So Rupa Goswami wrote this verse to Sanatana Goswami. So Bhagavan came to, like Bhagavan Rama appears in this world and he also left this world. Lord Krishna also came in this world and left. So nowadays Chaitanya Mahaprabhu is here. Hey Sanatana, very quickly finish all your royal duties and meet with Mahaprabhu, because after some time Mahaprabhu will also disappear. क्योंकि ये संसार के नियम है. Because this is the rule of this material world. If you think about it, then you will be free from the attachments of Maya. Everything belongs to Bhagavan. The land will remain, but like the place is still here, but so many people have come and left this world. So many kings, so many fights. So many fights, like this mind is yours, like territory fights all over the years of the earth. So the earth is still here, the land is still here, the land is here. सने हुए मिट्टी को पड़ा हुआ है, रक्त के द्वारा सने मिट्टी तो पड़ा हुआ है, किंतु सभी चले गए. But everyone has left. आने वाले
more people will come in the future, जाने वाले। and many also have left already. यहाँ हम फंस जाते हैं। We are in the middle here, caught. कहर की बात। It's also quarreling. This is mine. This is mine. इसी के कहा जाता है वैराग्य। This is called vairagya and renunciation. हाँ समझे। Do you understand? तो इसी पर इसमें कहर कहते जा रहे हैं, और कुछ नहीं है। हृद्रोगं आसु अपनिति अचिरेण धीर, अचिरेण शीघ्र धीर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते So, an intelligent person, पुनः पुनः भगवान के ऐसे he will again and again listen to these sweet pastimes of Bhagavan. इसलिए काम विकार से छुटकारा पा जाता है, उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। भागवत में जो राजला के 5 अध्याय, उनके 5 प्राण माना In जाता the है। Bhagavatam, the 5 chapters that speak about Rasa Leela, they are like the 5 life airs. अंतर लीला, अंतरंग लीला, निज स्वरूपभूता गोपियों की और राधिनी शक्ति राधा जी के साथ होने वाले भगवान की दिव्यादि दिव्य क्रीड़ा इन अध्याय में कही गई है। रास शब्द का मूल है रस। So the meaning of ras भगवान श्री कृष्ण ही है। is rasa. Actually, rasa is Bhagavan Shri Krishna himself. Bhagavan is the personification, embodiment of rasa. रसा जेवा लब्धा नंदिर Transcendental mellows. है, उपनिषद में ऐसे कहते जा रहे हैं। जिन Upanishads explains. एक ही रस अनेक रूप में प्रकाशित होकर अनंत रस का आस्वादन करें। एक ही रस रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वादक बन जाता है। So Bhagavan himself, he relishes and he relishes. No, he relishes and he makes others relish also. He relishes and make also others relish this transcendental mellows. आस्वादन कराइला चैतन्य महाप्रभु के लिए कार्य है। चैतन्य महाप्रभु ऐसी Chaitanya Mahaprabhu, he relished this beautiful rasa, and he also gave this to all the jivas. लीला धाम और विभिन्न आलम्बन एवं उद्दीपन के रूप में क्रीड़ा करे, उसके नाम है रास है। रस शब्द से रास बना हुआ है। So from the word rasa comes the word rasa. आश्रय आलम्बन, So ingredients of rasa, साधक के हितार्थ कभी-कभी Vibhava, Anubhav, के साथ ही भूमंडल पर भी अवतीर्ण हुआ करती है, जिसके देख सुनकर so Guru's in his commentary. अथवा उनके स्मरण चिंतन करके अधिकारी पुरुष रस स्वरूप भगवान की रसमयी लीला को आनंद ले सकें और स्वयं ही भगवान की लीला में सम्मिलित होकर भगवान को कृतज्ञता करें। हैं? भगवान की लीला में स्वयं ही So in the hands, the devotee will also join the pastimes of Bhagavan. बताइए, आनंद होता है। So much bliss in these moments. एक दर्शक बन जाता है और दृश्य बन जाता है। So you become the spectator, like the one who is seeing, and also you become that person who is also enacting in the pastime. So when you're in the drama, like those who played a role in the drama, लीला को दर्शन कर रहे हैं, दोनों में आनंद होता है। both are feeling bliss. Those who are acting in the drama and also those who are observing the drama. वो यात्रा थिएटर होते ना, घर अपना पैसा खर्च करके लोग करते थे। So people before they used to spend money to make this. नाटक कभी किया? Have you ever performed a drama? नाटक आदि जो करते हैं। Those who are dancing or doing dramas, and अपने पैसा खर्च so they used to spend their own money to present these things. करते थे सब। You know, रात भर 2 दिन 3 दिन रिहर्सल करना for पड़ता था। 2-3 days they had to practice. अपने चंदा देना पड़ता था, 20-50 रुपया चंदा। So you have to pay 20 or 25 chanda बनाते हैं to make a committee. में जो अंश ग्रहण करेंगे उनको एक व्यक्ति के 50-50 रुपया देना। So like a crowd funds, each person gives 20-25 chanda, some money. So if they had to rehearse for 2 or 4 days,
And then दर्शक के सामने दिखाते they would present in front of the public. अपने घर का पैसा खर्च करके So you'd spend your own money दूसरे को to आनंद देते हैं, give bliss to others performing a दूसरे drama. के आनंद दे रहे हैं, अपने आनंद भी आ रहे हैं। Because actually you're also feeling bliss when you're giving bliss to others. Happiness to others, you're also एक feeling दर्शक happiness. होता है, So one person is a darshak, someone who is देखा singing. देख ले, हैं? कितना आनंद है। इसलिए Also is ठीक feeling उसी so much प्रकार happiness. भगवान ऐसी लीला आदि करते So जाते Bhagavan is also performing this kind of pastimes. हैं, अनंत स्वरूप में प्रकाशित हो रहे हैं। He manifests in unlimited forms. Because the gopis are none else, like no any other person. Actually, gopis are Krishna himself. और अपने स्वरूप शक्ति भूता गोपियों की जय, शक्ति स्वरूपिणी गोपियों की जय वो प्रकाशित करे। And he manifests them with his Swarupa Shakti. So but Krishna is in his own form also, and स्वरूप जनी ये मतलब अचिंत्य शक्ति के द्वारा गोपियों के in his inconceivable potency, he is also manifesting all the के gopis. साथ क्या करें, आनंद विहार आदि करें And he is और दर्शकों को दिखा रहे हैं। performing many blissful pastimes and showing these leelas. ये लिखता है Feeling so much bliss. जेवा रस अंदर भगवती है। इस पंचाध्याय में So in these 5 chapters of the Rasa, अभिसार it explains about the श्री कृष्ण के साथ flute उनकी song बातचीत and the conversation between Krishna and the gopis, how the gopis came, how Shrimati Radhika disappeared, how she appeared again. वसनावसन पर विराजमान गोपियों की कूट प्रश्न का उत्तर, The questions of these gopis, प्रेम करे वर प्रेम करता है, you know, remember, the gopis asked, और प्रेम करो there are 9 kinds of love. नहीं करो, Some person you love नहीं करते हैं। and they don't love you back. Some person you may love them or not, they'll never love you back. Some person you कृष्ण भी दिया only they love you because they love you back. So gopis asked Krishna, which kind of love is Krishna's love? वन विहार So many pastimes, roaming the forest, प्रकार के जो है and many kinds of होने पर भी pastimes. दिव्य है। आरती के लिए व्यवस्था Arranged for the arati. समय के साथ ही साथ मानव मस्तिष्क भी पटलता रहता है, को भी अर्ध दृष्टि से प्रधानता हो जाती है, को भी वही दृष्टि को आज का युग में ऐसा जिसमें भगवान की दिव्य लीलाओं को तो बात ही क्या, स्वयं भगवान के अस्तित्व पर है, उसके पर ही विश्वास प्रकट किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम दिव्य लीला का रहस्य तो न समझकर लोग इसके तरह ही आशंका प्रकट करते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह लीला अंतर्दृष्टि से और मुख्य भगवत कृपा से ही समझ जाती है। भगवान की कृपा बिना लीला समझ नहीं पाए। So without the mercy of Bhagavan, you cannot understand these pastimes. भगवत कृत प्राप्त महात्मा को इसका अनुभव किया है, वे धन्य है, उनकी चरण धूलि के प्रताप से ही त्रिलोकी धन्य है। उनकी उक्तियों के आश्रय से लेकर यहाँ रासलीला के संबंध में जत्किंचित का दृष्टता की जाती है। यह बात पहली समझ लेना चाहिए कि भगवान का शरीर जीव शरीर के भांति जड़ First, you should understand that the body of Bhagavan is not material, it's like the body of the jiva. चिन्मय शरीर है। His body is जड़ transcendental. की सत्ता केवल जड़ में दृष्टि में होती है, भगवान की दृष्टि में नहीं। यह देह है और देही है। इस प्रकार भेदभाव केवल प्राकृतिक राज्य में होता है। So this difference between the body and the person is only in this देह और देही dual worlds. और The body and प्राकृतिक the person is different only in this world, but in the transcendental world there is no difference between Deha and Dehi, the body and the person itself, the soul. जहाँ की प्रकृति In भी the transcendental world, the nature is also transcendental, everything is transcendental in the spiritual world. जहाँ अचित की प्रतीति तो केवल चिद विलास अथवा भगवान की लीला को सिद्धि के लिए होती है। इसलिए स्थूल श्रोता के जो कुछ भी कहिए, जड़ राज्य में रहने वाला मस्तिष्क जब भगवान की अपरित लीला को विचार करने लगता है, person in material platform cannot understand. But when you go to spiritual world, then और क्रिया को भी आरोप तो दिव्य राज्य के विषय में ही रहता है। इसलिए दिव्य लीला के रस में समझने की
असमर्थ हो जाते हैं। So we are unable to understand this transcendental pastimes. We don't even know what is the difference between conscious and inert. शरीर जड़ है कि चेतन Is है, this body conscious or inert? भेद विचार कर नहीं पाते हैं। We don't even ये know व्यक्ति ये लीला को this. समझ नहीं पाते। So we will never be able to understand this ये शरीर pastime. क्या है? जड़ है, The body is शरीर तो मरा material. हुआ है, The body is dead. हाँ, शरीर जड़ है, Our body is किंतु dead. आत्मा रहने के लिए Material. जड़ Sorry, is से material. चेतनवत प्रतीत हो रहा है। But Chetan Bhat, because of the soul inside, looks like spiritual. Looks like a conscious. Sorry, conscious. Like we have eyes. Before eyes, we can see. आंख देख नहीं पाते। But if our तो soul goes, क्योंकि हमारे सारे we cannot इंद्रिय see. आदि जो काज कर रहे हैं, Actually, the senses, the eyes, ये everything, काज इसलिए कर रहे हैं, they are आत्मा यहाँ पर working विराजमान because the है। soul is in our bodies. इसी तत्व को जो जान लेते हैं, Those who know this वो मुक्त हो tattva, जाते हैं। they become delivered, mukta. इसलिए यहाँ पर गई, यह रस वस्तुतः परम उज्जवल रस का एक दिव्य प्रकाश है। जड़ जगत की बात तो दूर रही, ज्ञान रूप का विज्ञान का जगत में यह प्रकट नहीं होता है। But to speak of those in the material world, not even the Gyanis can understand this. जो मस्तिष्क का व्यक्ति जो है, विचार रखने वाले हैं, What to speak of this, जो मुझ कर रहने वाले हैं, the people of this material world, वो तो नास्तिक है ही है। like the atheists that are doing whatever they want. Even the Gyanis who are discussing Gyan and want to discuss Gyan, want to know about Gyan, समझ नहीं पाते। not even them, they also cannot understand. जीवंती सन्मुखताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगतम तनुवांगोगी जो प्रयासो अजितो जितो विषय से लोकम है। ज्ञानी लोग इसको समझ नहीं पाते। The Gyanis cannot understand it. ये कैसे संभव है? How is it possible? अधिक क्या कही, साक्षात चिन्मय तत्व को भी इस परम दिव्य उज्जवल रस का लेस मात्र नहीं दिख जाता। यही परम रस की स्फूर्ति तो परम भावमयी कृष्ण प्रेम स्वरूपा ब्रजगम के मधुर हृदय में होती है। इस राष्ट्र के यथार्थ स्वरूप और परम माधुर्य का आस्वादन उनको ही मिलता रहे, दूसरे लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस समस्त गोपियों के हृदय में परम माधुर्य So this is the topmost sweet mood in the heart of the gopis. और वही लोग जो है ये रस आस्वादन करते हैं। Only they can relish this rasa. मिलकर के गोपियों के क्या भाव हुआ? What is the mood that the gopis felt when they feel that when they meet Krishna? Only they know and only they can explain. क्योंकि ये अनुभववित्त है। Because this is something that only Anubhava Vidya means something only you know if you realize, if you feel like maybe you're speaking like I love you. ये शब्द मात्र है। But these are only words. किंतु इस शब्द की विशेष अनुभव क्या है? So what is the feeling of these words? The feeling of love. Those who love, they know, they feel actually. जिसके प्रेम के संबंध में ज्ञान ही नहीं है। But somebody doesn't even know about love. He doesn't know anything. और उसके ज्ञान होने पर भी नहीं होता। But even though the person has knowledge, but he doesn't have realization, the feeling, anubhav. आत्मा प्रवचन लपो न मेदया न बहुना सुदिन जमे वैसे वृणते तेन रब्ब तसेस आत्मा विवृणते तनुसांग स्वयं भगवान उनके हृदय में जब अपने स्वरूप को When Swayam Bhagavan कर देते हैं, manifests his form in your heart, then you'll be able to attain realization. इसलिए संभव नहीं। Otherwise not. वो दिव्यादि दिव्य अलौकिक जो लीला है ज्ञान के द्वारा भी संभव नहीं है। Hare Krishna? इस भागवत में ब्रह्मस्तुति में beleza, pode mandar subir. Obrigado. जीवंती सम्मुखम भवदीय वार्ताम ज्ञान के प्रयास त्याग दे करके So give up your endeavor for knowledge and ऐसे रसिक संत महात्मा विराजमान है। saints, just sitting in front of the saints and listen to Harikatha from them. आदि श्रवण करते करते Listening to Harikatha, listen, हृदय में then धीरे अनुभव slowly you will be able to attain realization. है। क्यों वो कथा में क्या रहता है? Because कथा नहीं है, व्यथा है। Katha is not Katha, it's Vyatha, it's actually pain, like the Katha that touch your heart. This transcendental vibration will come inside you and it will destroy all the anarthas you have in your heart. तब अनुभव होगा। Then you'll be able to attain realization. चलो समय हो गया ना, आरती करो। Okay, time is up, let's do Arati. जरूर जाना है। चलो ये सब कथा पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे। In the evening I'll continue.
हाँ समझिए, आनंद, You understand? आनंद की सर्वोत्तम दिखा रहे हैं। So the topmost bliss is being shown ब्रह्मचर्य here. धारण कर में जो आनंद होता है, So the bliss that you feel when you follow the brahmacharya vrat, समझ नहीं पाते हैं तो people दूसरे don't क्या समझ understand. पाएं? So what are the other things? How come they understand? जिसके जगह क्या बोलते हैं वो चक्र, क्या चक्र बोलते हैं? What is that chakra? The name of that chakra? हाँ? जो चक्र के द्वारा जो पहले से नाभि से लेकर के धीरे धीरे चक्र के द्वारा That chakra that come from the navel and slowly goes to the head, Kundali chakra. उसमें भी एक प्रकार वो भी आनंद है, उसके लिए क्या है भगवत मिलन की जो आनंद वो भी अत्यंत तुच्छ माना जाता है। So this is insignificant in front of the bliss that you feel when you meet Lord. वो Do you understand? ब्रह्मचारी के द्वारा संभव होता है और ब्रह्मचारी के लिए नहीं कार्य। वो आनंद क्या है? ब्रह्मचर्य के द्वारा ही आनंद, एक दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। So the brahmacharya also feels a Dibyananda, divine bliss. आज ये समस्त भी वर्णन करके दिखा रहे हैं। These are also described. जो कुंडली चक्र जो शास्त्र में You know, वर्णन the किया है। Kundali chakra also described in the Shastra. निर्विशेष में चले जाते हैं। But the generally goes to Nirvishesha, like the emerging Brahma, like in the Gita Bhagavan explains that the yogis, अपने ब्रह्म तालु भेद करके they open the Brahma tal on their head and they merge in Brahma. उसमें भी एक प्रकार आनंद है, This one kind of bliss also, वो साधारण भी नहीं। not ordinary. हम लोग जिस भागवत के कथा But जो the Bhagavata is telling about Premananda, ऐसा आनंद Rasananda. वो बहुत बहुत This is too much, too far, beyond all that. बहुत लोग So that's why वो कुंडली योग में चले जाते many हैं। people they go to the path of Kundali Yoga. कुंडली योग में जो चले जाते हैं ना, But if you go to Kundali Yoga, you cannot even आनंद से वंचित come हो to जाए। Premananda. You become cheated, like you become deprived of Premananda and Rasananda. मिल जाते हैं Because हो जाता है। this is very dangerous, because then you can go to the Advaitavad, Monism and हम लोग merge. संप्रदाय में उसको So that's why in our Sampradaya we are far from Kundali Yoga. आनंद होता है। केवल साधारण जो ब्रह्मचर्य जीवन जो है, So this, if you follow the Brahmacharya life in sadhana, you feel so much bliss if you follow the Brahmacharya life. जो आनंद जो है ब्रह्मानंद के फिल कर देता है। फिर ब्रह्मानंद से आगे जो है Then, यह प्रेमानंद, प्रेमानंद के आगे में so this bliss is one bliss, then one another bliss is Brahmananda, then more this Premananda, then even more Rasananda. है गौर प्रेमानंदी। केवल साधारण जो